Hello friends, welcome back to my channel. These days, we are covering some non-fiction important MCQs जो कि सभी लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के साथ। दिस इज वीडियो नंबर 7। As you were telling me in previous videos, आपने कितना स्कोर किया? Please keep telling me in this video as well your score in comments. Let us proceed to our video now. So we have covered 6 videos so far. This is 7th video. In total 100 questions we are going to cover in this series जो कि आपके लिए बहुत important होने वाले हैं. The first question of this video. Identify the work below that does not belong to the literature of 18th century. 18th century यानी कि the time period from 1700 to 1800, वो थी हमारी 18th सेंचुरी. तो आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें से कौन कौन से वर्क्स हैं जो कि 18th सेंचुरी में पब्लिश हुए हैं और कौन सा ऐसा वर्क है जिसके कि सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 18th सेंचुरी के या तो बहुत बाद या बहुत पहले पब्लिश हुआ हो. एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, गुलिवर्स ट्रेवल्स, द स्पेक्टेटर एंड an epistle to Dr. Arbuthnot. The correct answer the correct answer here is option number A, advancement of learning. Advancement of learning Francis Bacon का है. Francis Bacon did not belong to 18th century. 1605 का ये work है. Rest of the works belong all to 18th century. Next question, question number 62. Name the theorists who divided poets into strong and weak and popularized the practice of misreading. Correct answer is option B, Harold Bloom. Harold Bloom is the one who divided the poets into this category and also popularized misreading. Bloom actually attempted to trace the psychological process by which poets broke free from their precursors to achieve their own poetic vision. अपना खुद का poetic vision पाना चाहते हैं poets. He drew a sharp distinction between strong poets who perform strong misreadings of their precursors and weak poets who simply repeat the ideas of their precursors as though following a kind of previous theory, basically. Next question, question number 63. Who among the following is credited with the making of first authoritative dictionary of English language? Correct answer here is option B, Samuel Johnson. As Samuel Johnson, the first man to write an English dictionary. That is a question actually ki, should we consider Samuel Johnson to be the first person to write an English dictionary? Given the most scholars agree that title belongs to Robert Cowdery. बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि ये टाइटल जो है ये रॉबर्ट काउड्री को बिलोंग करता है जिन्होंने 1604 में बहुत ही अच्छी सी एक डिक्शनरी लिखी थी अराउंड 150 years back. And the answer would be that he did not. Robert Cowdery actually did not. Yet the notion that Johnson in 1755 was the first person who wrote an authoritative dictionary. It is easy to see why many people might not associate Cowdery with being the first dictionary. His book did not have the word dictionary in its title. उन्होंने उसको डिक्शनरी समझा ही नहीं, डिक्शनरी नाम ही नहीं दिया रॉबर्ट काउडली ने. दैट मे बी द रीजन दैट इट इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड अ डिक्शनरी. ऑन द कॉन्ट्ररी सैमुअल जॉनसन ने 1755 में फर्स्ट अथॉरिटेटिव डिक्शनरी पब्लिश की थी. Next question, question number 64. In Dryden's essay of dramatic poesy 1668, who opens the discussion on behalf of the ancients? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्राइट्स. क्राइट्स एशियंट्स के बिहाफ पर बोलते हैं और निएंडर ड्राइडन के बिहाफ पर बोलते हैं. कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द माउथ पीस ऑफ ड्राइडन, देन द आंसर वुड बी निएंडर. बट इफ वी आर being asked who speaks on the behalf of ancients, then the answer is क्राइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इन्वेक्टिव रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए हमें कह रहा है अब्यूजिव राइटिंग और स्पीच जिसमें कुछ हार्श वर्ड्स यूज किए गए अबाउट अ पर्सन और थिंग. सेकेंड ऑप्शन सेज इंसल्टिंग राइटिंग अटैक अपॉन अ रियल पर्सन, a writing or spoken text in which an apparently straightforward statement or event is undermined in its context so as to give it a very
different significance, the chanting or reciting of words deemed to have magical power. The correct answer here is option A. इसको मैं आपको example के through भी समझाऊंगी. Invective means insulting, abusive, or highly critical language about something, maybe most probably some other character in a literature piece. It involves labeling a person, place, thing, concept, or idea with a derogatory or demeaning label. Invective is the literary device basically in which one attacks or insults a person or thing or place through the use of abusive language and tone, and invective is often accompanied by negative emotion. Option A here is the right answer. Let us understand with the help of a Shakespearean example. These are some very abusive words in Shakespeare's Comedy of Errors spoken by Adriana. She says he is deformed, crooked, old, and sere, ill-faced, worse-bodied, shapeless everywhere, vicious, ungentle, foolish, blunt, unkind, stigmatical in making words in mind. देखिए कितने बुरे बुरे abusive words use किए गए हैं यहाँ पर. This is the perfect example of being invective. Next question, question number 66. In which of his essays does Homi Bhabha discuss the discovery of English in colonial India? The correct answer is option A, Science Taken for Wonders. Homi Bhabha's essay, Science Taken for Wonders, Questions of Ambivalence and Authority Under a Tree Outside Delhi, May 1817. ये है इसका पूरा title. First published in 1985 and reprinted in his influential book, The Location of Culture, is one of the most important essays in post-colonial theory. The essay Science Taken for Wonders. In Science Taken for Wonders, Homi K. Bhabha examines several moments in post-colonial literature that depict the sudden discovery of English book. The discovery of the English book establishes both a measure of mimesis and a mode of civil authority and order. Science Taken for Wonders, written by Homi Bhabha. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ लिस्ट को मैच करना है. हमें लेफ्ट साइड पर क्रिटिक्स दिए गए हैं और राइट साइड पर उन्हीं क्रिटिक्स के टेक्स्ट. तो शुरुआत करते हैं एक एक करके मैच करने की. सबसे पहले इस राइटर को देखते हैं, हॉरेस. इनके साथ मैच करेगा आर्स पोएटिका. आर्स पोएटिका, द आर्ट ऑफ पोएट्री, रिटन बाय हॉरेस इन 19 BC. Let us move to next one. जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन को हम लोग एसोसिएट करेंगे ड्रामेटिक पोजी से. वर्क बाय जॉन ड्राइडन, रिटन इन 1668. नेक्स्ट वन, डिफेंस ऑफ राइम के साथ हम लोग मैच करेंगे सैमुअल डेनियल को, और टिम्बर्स और डिस्कवरीज को हम लोग मैच करेंगे बेन जॉनसन के साथ. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, और ये क्वेश्चन भी मैच करने से रिलेटेड ही है. यू आर सपोज टू मैच सम एसेज विद सम एसेज. तो एक एक करके शुरुआत करते हैं. सबसे पहले जॉर्ज ऑरवेल के साथ ही देखते हैं. यहाँ पर मैच करेगा व्हाई आई राइट, जो कि 1946 में लिखा गया था. इज एन एसे बाय जॉर्ज ऑरवेल डिटेलिंग हिज पर्सनल जर्नी टू बिकम अ राइटर. नेक्स्ट हम मैच करेंगे ऑन दी कैनिबॉल को मिशेल डी मॉन्टेग्ने के साथ. एसे बाय मिशेल डी मॉन्टेग्ने. उसके बाद चार्ल्स लैम्ब के साथ हम मैच करेंगे ऑन दी आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, जो कि एसेज ऑफ एलिया का पार्ट है. जॉनथन स्विफ्ट ऑफ कोर्स विद अ मॉडेस्ट प्रपोजल. सो ऑप्शन नंबर बी हियर बिकम्स द राइट आंसर. Next question, question 69, is to arrange some terms in the chronological order of their emergence. Hearsay of paraphrase, stream of consciousness, practical criticism, defamiliarization. एक एक करके इन सब चीजों को करते हैं. सबसे पहले आएगा यहाँ पर stream of consciousness. The stream of consciousness traces back to the principles of psychology published in 1890 by William James. इसके बाद हम फॉर्मलिज्म की तरफ चलेंगे. द रशियन फॉर्मलिस्ट्स concept of defamiliarization proposed by Victor Shklovsky in his Art as Technique in 19
1917। तो डिफेमिलराइजेशन के साथ हम 1917 ईयर को एसोसिएट कर सकते हैं. देन we will move to practical criticism, which was a concept by I.A. Richards in 1920s, to be precise 1929. और उसके बाद आता है the concept of hearsay of paraphrase comes from the literary theory, in particular the study of poetry. It holds that the full meaning of a poem cannot be transferred into another form, such as prose or propositional statement, because the meaning of the poem is partly contained in the form of the poem itself. The hearsay of paraphrase is the title of a chapter in the well-wrought earned a seminal work of new criticism by Clint Brooks. The well-wrought 1949 का ये वर्क है. तो इसके हिसाब से हमारी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर. Next question number 70. Which two of the following works does Walter Pater regard as an example of great art in his essay style? The correct answer here is option C. That is B and C. Divine Comedy and Les Miserables. All art is great in proportion as it is devoted to the service of man and the glory of God. The Divine Comedy, Paradise Lost, Les Miserable, the English Bible. इन चार चीजों को उन्होंने बोला है. एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए. The Divine Comedy, Paradise Lost, Les Miserable and the English Bible. ये चार बहुत ही ग्रेट आर्ट है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर पेटर. इसके बाद हम बढ़ेंगे वीडियो नंबर 8 की तरफ. यू कैन रीच टू दैट वीडियो बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन हियर. यू मे जॉइन आवर क्लासेस टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल एंड द लिंक टू connect to us for admission purpose has been given in description.